Well, after Maharashtra loudspeaker controversy, this matter has reached Karnataka. Loudspeakers blaring Hanuman Chalisa to counter azan in 4 to 5 temples in Karnataka. Hindu outfit Sri Ram Sene have upped the ante against the Bombay government. Hindu outfit activists say they had planned the loudspeaker counter on the 1st of May, but they were waiting for the Chief Minister to take action. Bombay is facing heat from activists for not taking action on the loudspeakers installed at mosques in the state. Meanwhile, the police have taken activists into custody who were all set to launch the Chalisa chanting at a temple in Bengaluru. Sri Ram Sene had earlier warned it's going to counter morning azan with Hanuman Chalisa or devotional songs if the government does not take action against loudspeakers installed at mosques. ನಾಲ್ಕರಿಂದ 5 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು 9ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಾವು ಮೊದಲಾಗ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅವ್ರೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ವಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರ ಕಾರಣ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾइकನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय बार बार सरकार से कह रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर जो है वो कहीं पर भी कानून के साउंड पोल्यूशन एक्ट में नहीं आता है. उसके द्वारा अजान देने की जब बात की जाती है तो इसको अब कहा जा रहा है यह हमारा धार्मिक अधिकार है. जिस प्रकार से हिजाब को हमारा धार्मिक अधिकार है ये कहा गया और फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ये बताया कि यह आपका धार्मिक अधिकार नहीं हो सकता है. उसी प्रकार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब ये कहा कि अजान देना एक बार आपका धार्मिक अधिकार हो सकता है, लेकिन आपका लाउड स्पीकर से अजान देना ये आपका धार्मिक अधिकार कैसे होगा? ये बेसिक फंडामेंटल राइट कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी करीब 60,000 जो प्रार्थना केंद्र है उनके ऊपर के लाउड स्पीकर यदि निकाल सकते हैं तो फिर कर्नाटक में ये क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए श्री राम सेना ने जो आह्वान किया है तो ये आह्वान केवल हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से नहीं है. लाउड स्पीकर की परेशानी हर किसी को होती है. The face-off over Hanuman Chalisa doesn't seem to be ending anytime soon. The couple, the Ranas, will visit Delhi to brief Home Minister of the situation and Lok Sabha Speaker Om Birla as well. Meanwhile, the state government is likely to challenge the plea for Ranas for flouting the terms of the bail. After being released from the hospital, Ranas alleged that action was taken against them for chanting Hanuman Chalisa, launching a fight over Hindutva. BJP supported the independent lawmaker couple. The Amravati MP and MLA husband Ravi Rana were arrested by the Mumbai police on the 24th of April following their public declaration of reciting the Hanuman Chalisa outside the residence of Uddhav Thackeray, the Maharashtra Chief Minister. This in Matoshri in Bandra. After bail and hospitalization on May 5, Amravati Member of Parliament Navneet Rana did a Ghar Wapsi on Sunday from Mumbai's Leelavati Hospital. But not without some explosive attack on Chief Minister Uddhav Thackeray and flaunting the Hanuman Chalisa prayer book. Navneet had got bail in the sedition case, slapped after her bid to recite the Hanuman Chalisa outside Chief Minister Uddhav Thackeray's house. Navneet and her MLA husband Ravi Rana were granted bail on the condition of not talking about the Chalisa recital case. She roared and said if reciting the Hanuman Chalisa is an offence, then she will rather be in prison. अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ. अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं. हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ. Rana hit out hard at Uddhav Thackeray, daring him for an election fight and attributing his rise to power to late Bala Saheb Thackeray. उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर
इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। मैं कभी भी नफरत की भावना से काम नहीं करती। मैं मेरे लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि खुद से मेहनत करके वो व्यक्ति खड़ा हो और वो चुन के आके दिखाए। फादर के नाम से तो हर कोई जीता है, खुद के नाम बना के देखें तुम्हारे में ताकत क्या है। Navneet Rana's husband Ravi also hit out at the Shiv Sena, adding he'll apprise Home Minister Amit Shah now. जो हमारे साथ हुआ है वो हम केंद्र से न्याय मांगेंगे। केंद्र से उम्मीद है कि हमारे पे जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमको न्याय देंगे और संजय राउत अनिल परब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जो काले चिट्टा जो है वो भी केंद्र से खुला हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। संजय राउत ने तो कहा है कि बीजेपी की बैकिंग के जरिए आपने ये सब किया है, इस्तेमाल किया गया है आपका, ये कहा जा रहा है। संजय राउत में बोल दिया है, चवन्नी छाप है, वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का दलाल है और दलाली करते करते उन्होंने पूरी शिवसेना डुबाने का काम भी किया है। The government lawyer has cried violation of the bail condition after Rana's fresh outburst. What will be the Rana's couple next course of action in the Hanuman Chalisa controversy? With Pankaj Upadhyay in Mumbai, Bureau Report, India Today. The showdown over Bagga's arrest continues. Delhi court is likely to hear a case of abduction today. The court registered a case of kidnapping based on a complaint filed by Tajinder Bagga's father, Preetpal Singh. On Saturday, Punjab and Haryana High Court granted relief to Tajinder Bagga in a midnight hearing. The court ordered stay on any course of action against Bagga till the next hearing on the 10th of May. This after a fresh arrest warrant was issued against Bagga. After days of cat and mouse, under raging political storm, where the police from 3 states clashed over him, Bharatiya Janata Party's Tajinder Pal Singh Bagga got a massive midnight respite from the Punjab and Haryana High Court. On wee hours on Sunday, Punjab and Haryana High Court held an urgent post-midnight hearing and granted him relief. The High Court asked the Punjab police not to arrest Bagga till 10th of May, the next date of hearing on his plea for the respite. The question petition is filed by Tajinder Singh Bagga against that FIR, that the FIR is politically motivated and he has been falsely implicated in the FIR, and there is no iota of allegations in the FIR which comes under the sections of IPC mentioned in the FIR. After the High Court relief, the firebrand BJP leader hit out at Chief Minister Arvind Kejriwal again, accusing him of pursuing vendetta politics and being soft on the desecration case accused. अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि एफआईआर करके हमें डरा सकते हैं, गिरफ्तारियां करके हमें डरा सकते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहते हैं आप एक नहीं 100 एफआईआर करिए। हम जिस ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उससे ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और हमारे हौसले अब और भी बुलंद हुए हैं। केजरीवाल शुरू से ही डरता है, घबराता है तेजिंदर से, और आज से नहीं, जब से पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था उसके पहले से ही। उस समय के आपके कार्यकर्ता कहते थे कि केजरीवाल साहब को रात में भी तेजिंदर आता है सपने में। The BJP, which staged a protest at Kejriwal's house, had a political face-off with the Aam Aadmi Party. Kejriwal's party accused the BJP of harboring goons. FIR was filed in Punjab. While the contents of the complaint, the complainant, the victim, as well as the alleged perpetrator, all of them reside in Delhi.
but the jurisdiction, strangely, was with Punjab. And the reason was because they wanted to misuse the powers of Punjab police and curb Tajinder Bagga's freedom of expression. मोहाली कोर्ट का जो आदेश है वो अब आप देखिए, उसमें साफ तौर पे अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। पंजाब की सरकार ने कहा है कि जब हाई कोर्ट की सुनवाई होगी उस वक्त पूरा मामला सामने रखा जाएगा। इस पे हाई कोर्ट ने कल रात को सुन के अब आगे जो सुनवाई होगी उस पे तस्वीर साफ होगी कि क्या होता है। तो ये जरूर साबित हो गया बीजेपी की इतनी पूरी भाग दौड़ और पूरी प्रक्रिया से कि एक गुंडे को बचाने के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। Bagga is a vocal critic of Arvind Kejriwal and was booked by the police of Aam Aadmi Party-ruled Punjab for allegedly making provocative comments, promoting enmity and criminal intimidation. He was rounded up by the Punjab police but was seized by the Haryana police after a kidnapping case was lodged with Delhi police by the BJP Neta's father. A politics that has erupted where we see that the Congress leaders like P. Chidambaram has hit out to the police, calling that they're serving their political masters. On the other hand, the BJP is accusing that Arvind Kejriwal is afraid of Tajinder Bagga. With video journalist Ravikant Tawar, this is Shreya Chatterjee for India Today. Well, National Investigative Agency's biggest ever crackdown on Dawood's company in Mumbai. Multiple raids are being conducted on associates of Dawood, which include sharpshooters, drug traffickers, real estate managers of Dawood and Hawala operators. NIA in February this year registered a case pertaining to the involvement of top leadership and operatives of D company in terrorist activities, organized crime and acts aimed at creating unrest in India. Dawood was designated as a global terrorist in the year 2003 by India and the United States with a reward of $25 million on his head for his involvement in the 1993 Bombay serial blasts. The Gyanvapi Mosque issue has gotten bigger. The team carrying out court-ordered survey was stopped for the second time in a row. The team will submit the incomplete report to the court, which had set the deadline of today. The court is also going to hear the petition for the removal of Commissioner, who has been accused of bias by the Muslim community. Meanwhile, one of the petitioners have withdrawn from the case. A war of words has erupted over the issue. AIMIM Chief Asauddin Owaisi has condemned Varanasi Court's order on surveying the Gyanvapi Shringar Gauri complex and alleged that the court was opening way for anti-Muslim violence. BJP has hit out at Owaisi over his comments. And the ongoing tussle in Kashi over the Gyanvapi Mosque is just not the only controversy. A new demand for a similar survey at Taj Mahal has now emerged. Here's more. Amid the ongoing tussle in Kashi over the Gyanvapi Mosque, a new demand for a similar survey at the Taj Mahal has entered the showdown. A BJP leader from Ayodhya has now filed a petition demanding videography of the 22 rooms closed to the public in the historic monument. ताजमहल के उन्हीं 22 कमरों के पीछे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं वो शिव मंदिर है, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। और अब देश में तमाम इससे पीछे भी आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ। मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई से भी मुझको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया गया कि वो 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद हैं। तब मैंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया और माननीय न्यायालय से यही मांग की कि इन 22 कमरों को खोल दीजिए, कमेटी गठित कर दीजिए, इसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए, जो भी फाइंडिंग आए उसको जो है पब्लिक डोमेन में कर दीजिए ताकि ये विवाद सदा के लिए खत्म हो जाए। The applicant has sought a committee by the state government to look for Hindu idols or scriptures in the premises of the Taj Mahal. The Congress and the Bharatiya Janata Party had a massive showdown over this issue. भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि मुख्य मुद्दों पर बात करें, महंगाई कैसे कम हो इस पर याचिका दायर करें, बेरोजगारी कैसे खत्म हो इस पर याचिका दायर करें। इसकी जगह ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते नजर आते हैं, जो
संविधान के विरुद्ध है। कोर्ट को यह अधिकार है कि उसकी याचिका को स्वीकार करे या उसको खारिज करे। कोर्ट अगर किसी की याचिका को स्वीकार करके उसको अनुत्तरित देने की बात कर रहा है तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी को समस्या क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी इस देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होने देना चाहती? न्यायपालिका के पास अपना विवेक है, वो कानून की परिधि के दायरे में ही कोई निर्णय कर रही है और किसी भी व्यक्ति को आजादी है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। Back in Kashi, the court-appointed survey team for the Gyanvapi Mosque is facing resistance from the Muslim community, forcing it to stop the survey. कमिश्नर महोदय को और अधिवक्ता वादी को काफी रिसीव कराना। हम कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना नहीं आए। क्यों आपने कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया है? क्योंकि हमें कमिश्नर साहब की निष्पक्षता पर हमें संदेह था। तो ये संदेह आपने अदालत में नहीं कही? नहीं, अदालत आज कही है, आज भी कही। इसी हमारे एप्लीकेशन पर ऑर्डर हुआ। कमिश्नर को कार्रवाई करने के तो निर्देश है, उसमें कोई मनाही तो है? तो निर्देश है तो मनमाना करेंगे निर्देश। सेंटर से हम लोग को सहयोग नहीं मिला। पुलिस ने तो पूरी सहायता किया है, लेकिन आगे हम अंदर हुआ क्या? जब आप लोग गई तो अंदर क्या हुआ? बहुत ज्यादा की संख्या में उधर से जो है कि लोग आ गए।